नहीं पता किसी को, सुना नहीं फ्यूल सेल किसी ने? ओके, बैटरी पता है आपको क्या होता है? बैटरी तो पड़ा होगा। हम्म। क्या बैटरी नहीं पता, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है? लेड सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी। नोबडी रिमेम्बर्स बैटरी क्या होता है? बाइक चलाते हो ना आप लोग? चलाते कि नहीं? कितने लोग बाइक चलाते हैं? किसी के पास बाइक नहीं है क्या? हाथ उठाओ जिसका, जो जिसके पास बाइक है। रेज योर हैंड इफ यू हैव अ बाइक, इफ यू ड्राइव अ बाइक। नोबडी? क्या बात कर रहे हैं? क्या आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा? सुनाई दे रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? लॉगिन करके बैठे हुए हैं, ठीक है, बक बक करने दो, जो करना है करने दो। हम्म। कांट बिलीव नोबडी हैज अ बाइक। सर आ रहा है आपका? है सर है। कितने लोगों के पास बाइक है? बस एक एक बंदे के पास बाइक है? तो बाइक कैसे चलता है, कैसे स्टार्ट होता है बाइक? हाउ डज द बाइक स्टार्ट? बाइक स्टार्ट कैसे होता है, कभी सोचा है? स्टार्ट। हाँ, बोलो बोलो, हाँ यू आर राइट, क्या बोला था? मैं सुनाई दिया मेरे को, इसलिए बोल रहा हूँ, क्लियर नहीं था। सर वो गाड़ी के इंजन में स्पार्क होता है। जब हम सेल्फ स्टार्ट या किक करते हैं तो वो स्पार्क की वजह से फ्यूल में आग लगती है, जो इंजन में पिस्टन्स अप डाउन करते वक्त ब्लास्ट होने लगता है, जिससे बाइक चलती है। राइट। तो किक की बात छोड़ दो, किक तो मैकेनिकल हो गया। स्टार्टर से क्या होता है? स्पार्क होता है सर। स्टार्टर से स्पार्क होता है। स्पार्क के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो कहाँ से आता है एनर्जी? बैटरी। बैटरी, वही तो पूछ रहा हूँ, आप लोग के पास बाइक है, बैटरी पता नहीं रहे को क्या होता है बैटरी में? ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा आपका। कितने लोगों ने पढ़ा है बैटरी के बारे में, याद नहीं है? इट्स ओके। कितने लोगों ने पढ़ा है बैटरी के बारे में? लेड सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी। रेज योर हैंड। तो क्या होता है बैटरी में, किसी को याद नहीं है? ठीक है, याद नहीं है तो लेट अस प्रोसीड नाउ, आई टेल यू व्हाट हैपेंस। Okay, so fuel cells, we are going to look at fuel cell. So what is a fuel cell? It's just an electrochemical device, just like a battery, that converts chemical energy into electrical energy. बैटरी में वही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड लेड का रिएक्शन होता है और करंट जनरेट होता है। करंट इज व्हाट इज करंट? व्हेन यू से करंट, डज एनीबॉडी रिमेंबर व्हाट डू यू मीन बाय करंट? हम्म। ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली अ करंट, राइट? सो लेट अस लुक एट, so we have two electrodes, इसमें भी आप बैटरी में दो इलेक्ट्रोड रहता है, one positive one negative, cathode and anode, right? And the reactions produce electricity which takes place at the electrodes. We'll see all those things. So in all types of fuel cells, instead of battery in fuel cell, hydrogen is used as fuel. बैटरी में होता है sulfuric acid and electrodes, right? Sulfuric acid is used as fuel basically, and can be obtained from any source of hydrocarbon. Only thing is difference is कि हाइड्रोजन कैसे obtain करने का, so that will change the type of fuel cell. So this fuel cell can transform hydrogen and oxygen, that means reaction होगा hydrogen oxygen का, into electrical power
and only waste product is water. That is why it is clean. Nothing else is produced, only water is produced. Whereas when you burn any fuel, you get carbon dioxide and water. Okay, so every fuel cell has electrolyte, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है बैटरी में, which carries electrically charged particles from one electrode to the other and leads the reaction at the electrodes. A single fuel cell generates a tiny amount of direct current. बैटरी में भी डायरेक्ट करंट होता है, एसी नहीं होता है. एंड द कन्वर्टर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एसी. जैसे अपना कार में ऑल्टरनेटर रहता है, वैसे यू नीड टू हैव अ कन्वर्टर टू कन्वर्ट डीसी टू एसी. ये आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हो कुछ तो. So in practice, many fuel cells are usually assembled into stack. It's because one fuel cell is not enough; it will not give enough voltage. So that's why we need to combine in series a number of fuel cells to get enough voltage. Okay. And in 1932, Bacon developed the first successful fuel cell used oxygen, hydrogen, and an alkaline electrolyte and nickel electrodes. So that was the first fuel cell in 1932, almost 90 years ago. Okay. So as I said, it's really just a battery. Only thing is here we can constantly, continuously fuel or give the fuel. कभी खत्म नहीं हो सकता है because we have a back say tank of fuel which is hydrogen, and that is why it's called a fuel cell. One cell is like a 1 volt battery. You look at this one, hydrogen and air. Oxygen नहीं रहता, hydrogen and air रहता है because we don't want pure oxygen is very very costly. So we use air instead of hydrogen. Okay, but it can do 500 amps or 1000 amps of electricity. But for a car, we need about 100 volts, not 1 volt. So what do? You combine a number of fuel cells in series and you can get 100 volts or so many watts of electricity, which can be used for powering a car, and which is being done now. Okay, so this is a configuration of fuel cell. There's an anode, there's a cathode, and there's an electrolyte. Anode is a positive electrode, cathode is a negative electrode. अगर किसी कोई क्वेश्चन हो तो you can always stop me at that point. Don't wait for me to ask you कि कुछ क्वेश्चन है क्या, कुछ क्लियर नहीं है तो you can stop me. But just like a battery, there's an anode, there's a cathode, and there's an electrolyte. So it consists of two electrodes, namely anode, cathode, electrolyte. Electrolyte is a substance, it could be solid or liquid. Battery में liquid ही रहता है, but in this case you can have a solid or liquid electrolyte capable of conducting or moving ions from one electrode to another. Reaction के लिए ions have to move from one electrode to another electrode. So if you see this hydrogen oxygen fuel cell, there's a fuel which is hydrogen coming in here. There's the electrode, anode, and there's an electrolyte in between the two anode and cathode. There's a cathode, and there's an oxidant, which is air coming in. So what happens? At this point, hydrogen gives out electron and becomes H plus, and H plus will move from here, anode to cathode, where we have oxygen, which will react with H plus and electron to give water. ठीक है, समझ में आया? The fuel is oxidized on the anode and oxidant reduced on the cathode, right? So this, when the fuel is oxidized on the anode, that means it loses electron, and the cathode, it gains out an electron. One species of ions are transported from one electrode to another through to combine with their counterparts, and electrons travel through the external circuit producing the current. Right? So you have this electrons moving from here, and this is what is source of power. So what is the working principle? So you have hydrogen, which gives out electrons and forms
protons, which is H plus ion. The liberated electrons from hydrogen in anode side do not migrate through the electron. Electrolytes नहीं जाएंगे, they will go through the external circuit where work is performed, and then they finally go to the cathode. On the other hand, the positive electrons or H plus migrate across the electrolyte towards the cathode. Right? हमने देखा था कि H plus moves through the electrolyte and moves through the external circuit. At the cathode side, the hydrogen atoms react with the oxygen and oxygen from the gas, and electrons which are coming from the external circuit to form water as byproduct. And there's the reaction. So H plus half O2 plus 2 electrons, which is coming from external circuit, will give water and heat, because this is an exothermic reaction. Any questions so far? Okay. If there are no questions, let's proceed further. So this is electrochemistry. Okay. In a rocket, we convert all energy to heat energy. Rocket में ही होता है, which you see here. Hydrogen and oxygen burn, and it's converted to heat energy, which is and this it provides a thrust, because the steam goes out from here. It provides a thrust to the whatever space flight or whatever to lift from the ground. Well, fundamental chemical process is electrical, so we could convert energy to 1.1 volts of electrical energy. So instead of heat, in this case we are converting it to electrical energy. That's the only difference. So we have, let's look at this SOFC fuel cell. There's a type of fuel cell. What happens in this? Fuel comes in from here at, what is this thing? Is it anode or cathode? Anode, right? So at the anode, hydrogen is converted to H plus. Electrons go from the external circuit. At the cathode, oxygen is converted to E, or rather O minus. It reacts with hydrogen, and then we get water coming out from here with the fuel, and unused air goes out from here. So there are different types of fuel cells. SOFC is one type. We'll see that what is SOFC, and there's a proton exchange membrane. There's another type of fuel cell. Liberated electrons from hydrogen are responsible for production of electricity. What is produced by a combination of hydrogen, oxygen, and liberated electrons, and is sent out from the cell. The DC current produced by the fuel cell is later converted to AC using an inverter for practical application. Right? कितने लोग के घर में इन्वर्टर है किसी घर में इन्वर्टर? रेज योर हैंड. नहीं है किसी घर में इन्वर्टर? ठीक है. Voltage developed from single fuel cell varies from 0.7 to 1.4 volt. Again, we said that more power can be obtained by arranging individual cells in a stack, right? And we can get more power. We have already seen this. This is again the same fuel cell with a generator attached to it, oxygen, hydrogen coming in and producing power. So let us compare fuel cells economy or efficiency. So turbines, small turbines will give 25-30% efficiency. Gas turbines will give 25-35%. Natural gas, when it is used for power generation, it gives 30 to 42. Fuel cell gives around 47%. And if fuel cell is combined with turbine, efficiency is around 58 to 65%. So that is why fuel cell is better. Whereas, what is the efficiency of internal combustion engine? याद है किसी को? और पावर प्लांट थर्मो 1 में पढ़ा था आप लोगों को मैंने.
नहीं याद किसी को? इट्स अराउंड 30%, 30-35% रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा. So whereas fuel cell will give around 40-50%, around 50% you can say. So that is why fuel cells are better. So types of fuel cells, you have polymer, electrolyte. It all depends on electrolyte. Electrolyte change हो गया, fuel cell का वो नाम हो जाता है, right? So polymer electrolyte membrane fuel cell, phosphoric acid fuel cell PAFC, solid oxide fuel cell SOFC, alkaline fuel cell, direct methanol fuel cell, and molten carbonate fuel cells. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 types of fuel cells. Electrolyte change होता है, so you get different fuel cell. And these are various properties of the fuel cell. Electrolyte क्या है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, वो भी चेंज होंगे. And temperature जो रहेगा, right? Heat is produced because the reaction is exothermic. Temperature is here, it is 1000, 650, 200, 100, and 80. Polymer membrane is 80 degrees centigrade, whereas here it is almost 1000 degrees centigrade. Operating pressure is 1 atmosphere to 3 atmosphere, 8, 10, 5 atmospheres. Fuel is hydrogen or CO, hydrogen or CO, hydrogen, hydrogen, hydrogen here. And oxidant is always oxygen. So these are different types of fuel cells and their constituents. So in solid oxide, it is solid Y2 stabilized zirconium oxide. Molten carbonate is molten lithium carbonate, potassium carbonate. Phosphoric acid में electrolyte is phosphoric acid. Alkaline में KOH. And polymer में perfluorosulfonic acid membrane. So different types of electrolytes and anode cathode. So let's look at all these types of electrolytes. Polymer electrolyte membrane fuel cell. Anode is carbon platinum. Cathode is also same. यहाँ पर ये होगा, hydrogen will give electrons. It will go through electron circuit. Hydrogen will travel to the cathode where it combines with oxygen to give water, and water will go out. It will give around 0.7 volts. Phosphoric acid cell, इसमें electrolyte change होगा. Cathode is same, anode is same, cathode is same, platinum carbon. यहाँ पर भी same होगा, same होगा. Electrolyte is phosphoric acid. Solid oxide fuel cell, anode is nickel oxide, YZ cement, and cathode is lanthanum, strontium, magnesium compound. And again the reactions are same. यहाँ पर actually CH4 भी use कर सकते हैं हम. Hydrogen and methane can be used here. And the reactions are given here. CO2 आएगा इसमें because methane है तो CO2 आएगा इसमें. Whereas hydrogen में you get only water. Alkaline fuel cell में anode can be carbon platinum or carbon rank nickel platinum. Cathode is same. Again hydrogen यहाँ पर है, reaction वही होगा, water is produced, temperature is 80 degrees centigrade. Indirect methanol fuel cell, इसमें directly methanol use होगा. Methanol plus water will give CO2 plus H plus, and electrons will go from here. Hydrogen will go to this place, cathode, react and give H2O. Any questions? ठीक है. Then next is molten carbonate fuel cell. Anode is nickel aluminum or nickel chromium. Cathode is nickel oxide. यहाँ पर भी hydrogen या CH4 use कर सकते हैं. Reactions will be similar to what you have seen before. CH4 will give hydrogen and electrons and CO2, and here we'll get reaction and
So advantage disadvantage applications. Advantage is zero emissions because there is no CO2. If you use CO, if you use CH4, yes, there is an emission of CO2. But if you use high efficiency fuel cells convert chemical energy directly to electricity without combustion process. As a result, fuel cells can achieve high efficiencies in energy conversion. We've seen that 47%. High power density. A high power density allows fuel cells to be relatively compact, very simple, and beneficial in space constraints. Cars में इसीलिए use करते हैं fuel cells. Quiet operation. There is no noise there. And no recharge. Fuel cell systems do not require recharging. ऐसा जैसे बैटरी रिचार्जिंग करना पड़ता है, यहाँ पर नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली फ्यूल डालना पड़ता है. Disadvantage is difficult to manufacture and store pure hydrogen. This is a problem. Hydrogen is explosive, so we have to be very careful with hydrogen. And it is very expensive compared to battery. The cost is now coming down, but still it is quite expensive. So fuel cell car is definitely more expensive than a petrol car. Applications you can have anywhere. Personal vehicles, consumer electronics, backup power, anywhere. Doesn't matter. Transportation, cars, industrial transportation, public transportation, everywhere can be used. It can be used in homes, commercial sites, remote locations, anywhere. जहाँ भी power की ज़रूरत है, you can use it. ठीक है, any questions on fuel cell? सर वो फ्यूल सेल में जो हाइड्रोजन यूज करते हैं वो प्योर नहीं होता क्या? प्योर रहता है ना. तो सर वो स्टोर कैसे करते हैं? मतलब स्टोर करने का वही बोला, एक्सप्लोसिव, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी स्टोर्ड, लाइक जस्ट लाइक ऐसे भी अभी आपने देखा होगा, many cars run on LPG, राइट? कन्वर्ट करते हैं लोग. अभी इस पे आता है, नेचुरल गैस पे आता है, राइट? जैसे अभी some cars, some vehicles are actually fitted with natural gas engine, चलता है, राइट? ऑटोज कन्वर्ट किया है नेचुरल गैस में, तो दे हैव अ सिलेंडर व्हिच विल स्टोर द गैस एंड दैट कैन बी यूज्ड. ऑटोज में देखा होगा, नीचे उनके सीट के नीचे रहता है एक सिलेंडर, उसमें नेचुरल गैस स्टोर करते हैं. सिमिलरली हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड लाइक दैट एंड इट कैन बी यूज्ड. लेकिन भरना पड़ेगा, ऐसे खत्म नहीं, इट्स नॉट इनफाइनाइट. जैसे पेट्रोल खत्म होता है वैसे भरना पड़ेगा. खाली हो गया तो वी हैव टू अगेन फिल इट अप. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं कोई क्वेश्चन? पक्का? सर फ्यूल सेल की लाइफ किस पे डिपेंड होगी? उसके आउटपुट पे? फ्यूल सेल की लाइफ डिपेंड करेगी ऑन इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स बेसिकली. लेकिन सर वो हर बार सेम आउटपुट नहीं दे सकता ना? क्यों? क्यों नहीं दे सर सकता वही सेम? मेरा क्यों नहीं दे सकता सेम आउटपुट? क्यों नहीं दे सकता सेम आउटपुट? क्योंकि सर जैसे जैसे ईयर बैटरी पास होंगे. आप यूज करते हो, बैटरी सेम आउटपुट देता है कि नहीं देता हूँ? बैटरी आप यूज करते हो, आपके पास बाइक है? यस सर. बाइक है ना?
तो उसमें बैटरी में आप सेम आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता, कि हर टाइम डिफरेंट आउटपुट मिलता है? नहीं सर, सेम मिल। फिर सेम कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है, सिर्फ फ्यूल चेंज हो रहा है इसमें, और कुछ नहीं है। देयर इज नो अदर डिफरेंस। Conceptually it is same thing, just thing is fuel is changing. Instead of using something else, we are using hydrogen. लेकिन सर वो रिचार्जेबल होता है ना बाइक वाला। हाँ, तो यहाँ पे तो इसमें फ्यूल है ना, हाइड्रोजन रिचार्ज करना पड़ेगा ना हमारे को। यहाँ पर हाइड्रोजन इज फ्यूल, हाइड्रोजन रिचार्ज करना पड़ेगा। बैटरी में है H2S से वो रिचार्ज करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, राइट, बैटरी को। यहाँ पर हाइड्रोजन डाला तो हो जाएगा अपना रिचार्जिंग। यस सर, क्लियर। कोई क्वेश्चन किसी को? हेलो सर। या सर मतलब अब केमिकल इंजीनियरिंग के नॉलेज के हिसाब से ये कैसे अप्लाई करेंगे हम फ्यूल सेल को? अप्लाई करेंगे फ्यूल सेल को, केमिकल इंजीनियरिंग नॉलेज। बेसिक वही है। See, what you are talking about is, अभी देखेंगे हम, we'll see the theory behind it। वही देख रहा हूँ मैं, एक PDF था मेरे पास, वही डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। Why it is in thermo, right? Why we are doing it in thermo, बराबर ना? हाँ सर। राइट, सो ये देखता हूँ, वही डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, बस नोट्स का स्कैन निकाला है मैंने। हैंग हो गया। देख रहा क्या ये? कैन यू सी द PDF? फ्यूल सेल्स। यस सर। सो इसमें थ्योरी नहीं करूँगा, हमने कर लिया थ्योरी पूरा ऑलरेडी। ये सब देख लिया था हमने। There's nothing new here. Okay. Okay. So if you look at fuel cell and if you apply first law is delta H is equal to Q minus W, neglecting kinetic and potential energy. And for non-flow process it is delta is equal to Q minus W. ठीक है? And reversal process के लिए अपने को पता है Q is equal to T delta S. So if you put this here, what you get is delta H is equal to T delta S minus W. ठीक है? And what you'll get is W is equal to delta H minus T delta S. If you take that W here, that is output, right? Work done. This is electrical output. You will delta H minus T delta S. And what is delta H minus T delta S? It is essentially delta G.
ठीक है, इक्वेशन 1 में किसी को डाउट है कुछ? ओके, सो अल्टीमेटली ये जो हम कर रहे थे पूरा डेल्टा जी इज व्हाट इज अवेलेबल वर्क फॉर any chemical reaction, right? And we always said delta G has to be negative to for the reaction to be feasible, right? So if you take hydrogen gives 2 electrons, and then the reaction with oxygen gives water. One molecule of hydrogen produces 2 electrons, right? One molecule of hydrogen is producing 2 electrons to pass to external circuit, right? On the basis of 1 mole of hydrogen, the charge or Q transferred between electrodes, that means external से जाके क्या होता है? Q is equal to 2 times Na. Na is Avogadro's number because 1 mole will have so many atoms, right? So you have 2 Na into minus E coulombs. So each electron will have some charge, and this is 2 times, इसमें 2 आ रहा है, एक hydrogen is giving 2 electrons, right? So one molecule is giving 2 electrons, but अगर if you look at Avogadro's number says कि एक मोल में कितना आएगा, that is so many numbers of atoms are there, so that is a charge which is transferred by 1 mole of hydrogen. ठीक है, any questions on this? Q is equal to Na into minus E. Devendra? No, sir. Okay, so Na into E, if you take this, is equal to, actually it is Faraday's constant, which is 9642485 coulombs per mole. So that is the charge which is released by 1 mole of hydrogen. And if you put this here, Q is equal to minus 2 into F, because Na into E is F, so it is Q is equal to minus 2F, minus 2 times Faraday's constant. So electrical work, product of charge transferred and EMF, voltage of the work, right? Electrical work is always V into E, right? So W is equal to minus 2F into E. E is voltage. So that is the total work done by this hydrogen molecule or mole. तो इतना joules of power आएगा. The EMF of our reversible cell is nothing but E is equal to minus W upon 2F, and what we have seen is this delta G, ऊपर देखा था हमने, right? Minus W is equal to delta G. So what we get is essentially delta G upon F. So if you know the delta G of a reaction, and in this case it is hydrogen and oxygen, then we know we can find out what is the voltage which can be developed. समझा क्या देवेंद्र? हाँ सर, वो लास्ट पॉइंट नहीं समझा था, EMF of reversible. EMF is equal to voltage actually, right? Electromotive force is nothing but voltage, right? We said of or hydrogen gives 2 electrons, right? One molecule will give 2 electrons. अगर हमने 1 mole लिया हाइड्रोजन का, तो it will be 2 into Na. इतने electrons आएगा, right? Na is Avogadro's number, right? Because that many number of atoms are there in 1 mole of hydrogen. So that is 2 into Na into minus E. Minus E is charge of 1 electron. That is the total charge which is generated by 1 mole of hydrogen. ठीक है? And by definition, Faraday's constant is nothing but Na into E, which is how much charge is given by 1 mole of hydrogen, or 1 mole. So 96485 is the constant, universal constant. Electrical में पढ़ा होगा आपने. Faraday's constant is this much. So in this case, Q is equal to minus 2 into is nothing but F, so 2 times F.
Now if you convert this into work, right? Q is equal to minus 2F. तो W is equal to क्या हो जाएगा? Voltage into current, right? Charge into ये. So we are saying minus 2F into कितना voltage generate हुआ. That is the work done. Basic electrical engineering का है. So voltage into current or charge, right? So W is equal to nothing but minus 2F into E, and we know that W is equal to delta G ऊपर दिखाया था, right? From we say that work done is equal to delta G, and we have seen that. हमने कितना भी देखा था हमने. Always we talk about delta G chemical reaction के लिए, because it's not so much dependent on pressure. The work done is always equal to delta G or minus delta G. In this case, we can write this as voltage is equal to E is equal to W upon minus W upon 2F, which is nothing but delta G. This is delta G upon 2F. So that is how much voltage can be developed from any reaction. अगर हाइड्रोजन लिया तो क्या होगा? We can see. CH4 लिया तो क्या होगा? We can see. To apply this equation to hydrogen water fuel cell operating hydrogen oxygen fuel cell operating 298 Kelvin 1 bar with pure hydrogen oxygen as reactant. So if you assume ideal gases, we can see delta H of at 298 is minus 241818 joules per mole. This is standard. And delta G is minus 228 per mole. W is equal to ये रहेगा delta G, and Q will be equal to delta. This is what delta H minus delta G. ऊपर देखा था हमने, right? Q is equal to delta H minus delta G. So we can calculate delta H or Q, sorry. So Q is equal to this much. इतना joules per mole होगा. समझा क्या इतना? We just taking these values of delta H and delta G. Standard values है ये 298 पर. They are easily available in the tables. थर्मो के पीछे के बुक में जाके देखोगे तो मिल जाएगा ये. So W we calculating as delta G. Q is equal to this is delta G minus delta H, and this is the value of delta G Q. If we put it in this one equation, E is equal to minus delta G upon 2F, we will get the value of इतना electrical voltage generate होगा. 1.184 volts will be the voltage generated by hydrogen oxygen fuel cell. सर वहाँ पे जो वर्क डन था वो पॉजिटिव आएगा ना? Work done positive आएगा. क्यों पॉजिटिव आएगा? इसकी वजह से क्या? माइनस W इज इक्वल डेल्टा G. हाँ सर. ओके.
नहीं, this work done is essentially a sign convention है ये. When you say minus W, what is sign convention? Delta G है work done. See, हाँ when you सर. say minus W is essentially sign convention. That means work done by the system. Okay. ये sign convention old and new sign convention का है प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है. Essentially work done is equal to delta G. हमने देखा था पहले भी. When we talked about available work, we always take delta G. You don't take minus delta G. देखा था ना, feasible reaction के लिए delta G has to be negative. हाँ सर. Right? So this is essentially sign convention telling कि work is done by the system on the surroundings. जैसे अगर fuel cell है, fuel cell is working on the car, right, and driving the car. That is what it says. That this minus is only indicating a direction कि कहाँ से कहाँ जा रहा है power work. That is why I have not taken as minus delta G. It is delta G है ना चाहिए, because that is what it says. Delta G is available work, not minus delta G. ठीक है, समझ में आया देवेंद्र? हाँ सर. Right? It is actually just showing direction और कुछ नहीं है. So essentially it is that only. तो डेल्टा जी ही लेना पड़ेगा, माइनस डेल्टा जी नहीं लेना पड़ेगा. सो इफ यू लुक माइनस डेल्टा जी और ये लेके, दिस इज व्हाट वी गेट एज क्यू, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो वी गेट 1.184 वोल्ट्स, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इन 1 कूलम. दैट इज ऑल. ये सिर्फ कंबाइन किया इसको. तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल विल गिव 1.184 वोल्ट्स एज पावर. एंड इफ इट ऑपरेट्स एट 333 केल्विन, क्यू चेंज हो जाएगा और डेल्टा जी चेंज हो जाएगा. राइट? दिस इज 298. अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये वोल्टेज चेंज हो जाएगा. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज एट डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट टेम्परेचर वी गेट डिफरेंट वर्क आउटपुट एंड डिफरेंट वोल्टेज. यहाँ पर 1.184 है, यहाँ पर 165 है. ठीक है. So reversal fuel cell shows that electrical output is more than 90% that obtained by combustion of hydrogen. ये मेरे को समझ नहीं है, मैंने लिखा है but I don't recall this. 1.165 and 1.184. I think this you can ignore. I don't recall this. What is this thing? Because this is actually ये यही लिया है 1.165 by 1.184. That means almost 90%, 98% of power मिलता है. This is theoretical, right? Again, we are talking about theory here. कर्मों में क्या है? Because it tells you what power or voltage you can generate. Right? बात theory 298 पे हमने लिया, डेल्टा जी वगैरह लिया आपने, तो it can maximum it can generate is 1.184 volts. And that's why we are studying in thermo. Actually, it generates 1.165 volts at 333 Kelvin. So it is almost 98% efficiency of theoretical. मतलब सर एट 333 केल्विन पे हाइड्रोजन जो इग्नाइट Ignite नहीं होता है. It's actually efficiency. fuel cell only. It is in the fuel cell because of heat. हमने देखा ना कि heat of reaction होता है, right? Because oxygen and hydrogen when it combines, it liberates energy. Heat is released because exothermic reaction है. तो temperature बढ़ जाता है. Fuel cell doesn't operate at 298, operates at different temperature. हमने देखा different temperatures से different fuel cell के. Right? So actually, if it is operating at 333 Kelvin, what is the W? पूरा ये same calculation repeat किया तो we get 1.165 volts. So it is at 98% of what we get at 298. समझा क्या? टेम्परेचर इफेक्ट है ये, और कुछ नहीं है. जैसे 298 पर इतना मिलता है, 333 पे इतना मिलता है.
बिकॉज डेल्टा एच आ जाएगा ना इसमें, यू सीन दिस राइट, डेल्टा एच चेंज होगा, डेल्टा जी चेंज होगा टू 333 पर, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल सी दैट वोल्टेज विल चेंज. बट एक्चुअली दैट इज मैक्सिमम. थर्मो विल टेल अस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1.165 हो सकता है, 330, दैट इज मैक्सिमम विच कैन बी theoretically obtained based on fundamentals. But actually what you get is 60.6 to 0.7 volts. This is close to 50% of the heating value of the fuel. And Carnot cycles हमने देखा था कि if you do combustion you get about 35 to 40% or 30-35%. So essentially fuel cell is higher efficiency, and that is why everybody is focusing on fuel cell, because एक तो pollution कम होता है. If you use hydrogen, use methane and other things, yes there is pollution. But if you use pure hydrogen, then pollution is reduced and efficiency also increased. That's the advantage of fuel cell. That's what they will do, is they will try to increase this voltage. जितना ये voltage बढ़ेगा उतना आपका efficiency बढ़ेगा. Currently it is about 50%. 0.6 बोला था, is around 50% of what is theoretically possible. ठीक है, any questions? और सर जो हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम का, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या कन्वर्जन का, और उससे वोल्टेज निकाल सकते हैं? ये जनरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या होगा, के वैल्यू विल वेरी हाई. In this reaction, K value will be very high, so reversible reaction will be very low. Almost 100% conversion रहेगा. If you take a delta G is equal to minus RT ln K देखा था राइट हमने. So if you take this delta G value जो हमने देखा यहाँ पर, find out what is the value of K, you get very high value of K. Conversion will be almost 100%. ठीक है, any questions? और कोई क्वेश्चन देवेंद्र? नो सर. ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपका MCQs मैं शेयर कर दूंगा. और दूसरा, अगर आप केवी नारायण देखेंगे, आई वांटेड टू शो यू समथिंग. केवी नारायण, कैन यू सी दिस? यस सर. So this is appendix C of KV Narayanan, aptitude test in chemical engineering thermodynamics. इसमें काफ़ी कुछ MCQs दिए हैं. In fact, some of these tests these are taken from GATE. कुछ कुछ क्वेश्चन GATE के भी हैं, बट काफ़ी MCQs हैं यहाँ पर. एंड यू कैन गो थ्रू दिस. आंसर्स भी दिए हैं पीछे इसके. There are I think more than 200 MCQs. Thermo 1, Thermo 2 दोनों आएगा इसमें. You have to select the right one.
There are more than 200 questions, 235 questions. Fill in the blank type भी questions हैं यहाँ पर. True false भी है. So you can go through all these questions. I will also share the questions. इसके answers भी दिए हैं यहाँ पर. ठीक है? So you can go through this and help you prepare for the exam. Mostly online ही होने वाला है आपका exam.